Hello everyone, welcome back to Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. I am Pushpendu and I am back again with the next session from the chapter Excretory Products and their elimination. Okay, so let me see who all are live with me right now. Abhi Pankudi ma'am has taken a session, right? उसके बाद अभी मेरा session है. I know it's a tight schedule for you. थोड़ा आराम से शुरू करेंगे. Okay, let everyone join in. थोड़ा पानी वानी पी लो and then we'll start. It's a easy topic today. Okay, we'll talk about the various diseases of the excretory system. Okay, we'll talk about it. So Gul Hassan, hi, good evening. Sarah, Aisha, I see Dharanjay, Amif, Pawan, wow, Aisha, Mission MBBS, Rani, Priya, Dhananjay. Okay, good evening everyone. Please join in quickly so that हम लोग ये session शुरू कर पाए. Again, it's a festival season, right? Diwali आ रहे हैं. So I am sure all of you must be very excited. I am pretty excited for Diwali, of course. I am perfectly fine, Sarah. Good evening. You missed the last class? No problem. But बेटा last class बहुत important था. You have to revise it. आप देख लेना, ठीक है? ओह हाँ, या लास्ट क्लास थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया था. नो प्रॉब्लम, आप देख लेना लास्ट क्लास थोड़ा. सौम्या, आज लास्ट सेशन है. यस सर, आज लास्ट सेशन है फॉर दिस चैप्टर. ठीक है ना? ओके, चलो, आई विल क्विकली टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन ANTHE and yes, the examination is very near now. 5th to 13th and 6th to 13th, these are the slots. Enroll yourself. This is a very big opportunity. You see the prize, this prize is a visit to NASA, and of course you don't have to pay anything for it. See here, these are the sessions which are going on. You can see the teachers who are available for these sessions. You can see it, different batches are happening. Please explore that. There's a student survey form which we have made. Please fill that. The link is there in the description. Please do it. You can scan this and this will take you to NEET Aakash digital platform. You can explore the various courses over there, and definitely like the session, subscribe, and you have to share and comment. Okay, so now if you all are ready, then I can start the class. क्या बोल रहे हो? देवाशीष. Okay, hi. सर ऑनलाइन क्लास करता हूँ बट आपसे पढ़ना अच्छा लगता है. वाओ, थैंक यू सो मच देवाशीष. आई सो होप दैट आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. उत्कर्ष, हाउ टू रिमेंबर. ओके, हाउ टू रिमेंबर. देखो उत्कर्ष, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस दैट यू वुड फॉरगेट. तो रटना नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू इज रिलेट. आप चीजों को रिलेट करो, एक स्टोरी बनाओ, एक कहानी बनाओ, ताकि यू डोंट फॉरगेट. राइट? अगर कॉन्सेप्चुअलाइज करके आप सोचोगे, समझोगे, देन यू डोंट हैव टू फॉरगेट. यू कांट फॉरगेट इन फैक्ट. राइट? सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग. धीरे धीरे कुछ जगह पे मैं सिखा भी दूंगा, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो. क्या मैं NEET 2030 में अपियर कर सकती हूँ? बेटा 11th में तो आप नहीं दे सकते. राइट? आपको 12th होना चाहिए, बिकॉज इफ यू क्वालिफाई योर 12th पासिंग सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड. चलो, नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेशन को शेयर कर दो सो दैट ऑल योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड गेट द बेनिफिट, गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम मी. राइट? चलो, लाइफ ऑफ अ गार्बेज. You very well know मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं. राइट? दिस इज मीट मिस्टर गार्बेज. अब इनका जिंदगी कुछ ऐसा है, ये वेस्ट है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. राइट? पीपल डोंट वांट देम, पीपल डू नॉट वांट देम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल डिजीज स्प्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेइंग देयर. मिस्टर गार्बेज helps them to grow. So we don't prefer them because that will increase the chances of us getting diseased. So हमें तो पसंद नहीं है. राइट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बेस्ट फ्रेंड तो गार्बेज ही है. अब ये जो गार्बेज है, आपको पता होगा कि ये गार्बेज को मैनेज करने के लिए वी हैव डेवलप्ड अ वेरी एफिशिएंट एंड अ वेरी गुड सिस्टम. बट हाँ, प्रोवाइडेड
हम सब लोग अवेयर होके इसको प्रॉपरली फॉलो करें तो तभी ये काम करेगा ये सिस्टम, राइट? सो yes, Mr. Garbage. So this works only if we are following the rules and regulations. जैसे few things are supposed to be put into one bin. The other things are supposed to be put in one bin, right? If you visit the airport, if you visit railway stations, you will see that ड्राई के लिए अलग, वेट के लिए अलग, प्लास्टिक के लिए अलग, ऐसे सेग्रीगेट किया जाता है. बट इफ वी आर नॉट फॉलोइंग, तो कितना भी हम सिस्टम एफिशिएंट कर ले, इट विल नॉट वर्क, है ना? सो अब इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? इनका जो काम है, इफ यू सी दीज पीपल, राइट, दे टेक केयर ऑफ द गार्बेज, and yes, these are the people who come near your home, collect it, and a big thanks to these people because they help in removing the garbage. So यहाँ पे हमारे सिस्टम पे these are the specific people who help us, thanks to them, because they help us to remove the garbage. Otherwise कुछ ऐसे होता है ना, the pile of garbage would have been increasing, it would stink, the whole world would stink, too much of dirty places, it's all accumulated. We don't have that. Why? Because we have a very efficient system of this management. Correct? So, ये तो हमारे डेली लाइफ में हो गया. हमारे बॉडी के अंदर भी जो गार्बेज है, इसको भी एड्रेस करने के लिए we have a system. The human excretory system is the one which addresses these unwanted waste materials from our body. Addresses मतलब it helps in removing these unwanted waste materials from our body. ठीक है? Cute garbage, biodegradable, non-biodegradable. Yes, Sara, very very important, right? So इसको segregate करना बहुत जरूरी है, and plastic specifically. Okay, so we have been studying about the kidneys, we have been studying about the nephrons, we have been studying about the mechanism of urine formation. किस basis पे urine बनते हैं, है ना? हमने सब we have studied about this. I hope you have revised and you have to keep revising. अच्छा, someone was asking, right? So कैसे याद कैसे रहेगा? How to remember? अब देखो बेटा, जिन लोगों ने ये सेशन अटेम्प्ट किया है, सुना है, you must have seen that मैं पिक्चर्स के हेल्प से I try to explain those things to myself as well as you. क्यों? अगर दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाए तो you will not be able to forget. So this is one of the ways which you can try to keep things here and not forget. Okay? So yes, these are the structures that we have been studying. We have studied. Now, क्योंकि ये एक organ है, this is an organ, there are chances that this organ can fail. It may not work properly. हो सकता है, right? Correct? So, okay, just 1 minute. Now, such stages, such condition where the kidneys are exhausted, or rather I would say the kidneys are not functioning properly, kidneys are malfunctioning, those situations or those stages are called the kidney failure or the renal failure. It is also known as the renal failure. Fine? So what is happening here? The kidney has actually lost the ability to perform the excretion process. It is not able to filter your blood. It is not able to remove urea, creatinine, right, through urine. Okay? Okay. Now, this failure of kidneys can be gradual, it can be sudden. Gradually खराब हो सकता है, suddenly भी खराब हो सकता है. I'll talk about it. What happens when? Dialysis, yes, I'll talk about it. Wait, आज ही पढ़ाऊंगा मैं. चलो, kidney failure, I can try to, define it in two ways. ठीक? Number one, acute renal failure. और second हो सकता है chronic renal failure. Acute मतलब, acute renal failure क्या है? देखो. So this is basically the rapid, sudden, quick fall in GFR, glomerular filtration rate. अच्छा, अब मैं चेक करता हूं कि कितने लोगों ने स्टडी किया है. पवन, no, I couldn't share anything, right? Study material, okay. I'll see whatever materials I have, I'll try to share there. But यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक? So मेरा सवाल का जवाब दो पहले, पवन and everyone. Glomerular filtration rate. What is glomerular filtration rate? जल्दी से जवाब दो on the chats. Chat पे जवाब दो. Let me see who are actually
those students who are listening to me properly, revising and following my instructions as per the instructions I'm giving in every session. Type it out. GFR क्या है? What is GFR? Because this is very important, you know. If you do not know what is GFR, then बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा. Let's see. Can you tell me what is GFR? GFR is blood test? उत्कर्ष नहीं. Filtered are found by kidneys per minute. Okay. Glomerular filtration rate. Urine found per minute. बेटा यूरिन नहीं बोल सकते. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में यूरिन बन जाता है ना. पूरे स्टेज होने के बाद दैट यू कॉल यूरिन. ओके, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन भी होता है. वो पूरा चीज यूरिन नहीं है. अगर पूरा चीज यूरिन होता तो रीअब्जॉर्प्शन तो होने की जरूरत नहीं पड़ती. करेक्ट, बिकॉज यूरिन इज अनवांटेड. It has to be thrown out. But you know, after the Bowman's capsule, when PCT comes, DCT comes, Henle's loop comes up, there is a lot of reabsorption which is happening. Filtrate form per minute. Yes. Yes. To check how well your kidney is working, yes, there are many tests which can be performed to do that. Well, glomerular filtration rate is basically the rate of formation of filtrate at the glomerulus, right? By the glomerulus or at the junction where the glomerulus is there and the Bowman's capsule is also there. ठीक है. Now, acute renal failure से क्या होगा? The rise in urea and creatinine levels, as I was talking. ठीक है, मैं आपको बोल रहा था, right? So, glomerular filtration rate rapidly decrease कर जाएंगे, तो यूरिया फिल्ट्रेशन प्रॉपरली होगा नहीं. यूरिया creatinine levels भी increase हो जाएगा आपके blood में, which is not good. Because your blood does not require urea and creatinine, so it has to be removed. Filtration हो ही नहीं रहा है, तो कैसे remove होगा? Next, let's move on to the chronic renal failure. This is a type of renal failure where the gradual decrease of glomerular filtration rate happens. This is why, because the kidney is gradually degrading, or rather it is gradually becoming non-functional. It's not able to function properly. Gradually this is deteriorating. Fine. इसे chronic kidney disease भी बोलते हैं, CKD. Fine. Okay. Now, well, you know, our kidneys definitely promise us to keep ourselves, our body healthy, right? It helps in filtering the blood, so we definitely should be very thankful to our kidneys. But अगर ये ठीक से काम नहीं कर सकते, तो you know what will happen? The urea levels in the blood will increase. Right now you see the urea levels is very low because it was working properly. Right now if it is not functioning properly, then definitely the urea levels increases a lot in your blood. Fine. Okay, that's great. अच्छा, okay, इतना तक समझ में आ गया? All of you, can I get a yes on the chat? इतना तक समझ में आ गया? ये छोटा सा ही सेशन है, इजी सेशन है, आराम से पढ़ा दूंगा मैं. यस सर. सारा, हसन, आपको समझ में? रानी, परफेक्ट. आयशा, यस. फातिमा, परफेक्ट, बढ़िया. एमी, समझ में आ गया. सचिन भी बहुत diligent and a very regular student. I've always seen you here. Very good, thank you so much. Perfect, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अगर बॉडी में किडनी जो है, if it is not functioning properly, the urea level increases, and such a condition is basically called uremia. This is nothing but the accumulation of urea in the blood due to the malfunctioning of the kidneys. Accumulation, very important word. It's a key word for uremia. Uremia क्या है? This question can be asked. Lakshmi, hi. So this question can be asked, what is uremia? It is the accumulation of urea in the blood due to malfunctioning of the kidneys. And you know, this is highly toxic for our body. It's very, very toxic. ठीक? Okay. Is this condition treatable? क्या हम इसको treat कर सकते हैं? Right? Let's see. You must have heard about it. If you don't know what is this, but I'm pretty sure you must have heard about dialysis, right? Someone was talking about it. Someone was talking about it on the chats.
सर, आप सचिन सर से ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं ना? यस, सचिन सर से डेफिनेटली मैं तो कांटेक्ट में रहता ही हूं. ओके, सो जमा हो जाना. ओके, यस पवन, करेक्ट. Hemodialysis. Okay. Now, the process of filtering the nitrogenous waste from the blood. Hemodialysis कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से फिल्टर आउट किया जाएगा. बॉडी से मतलब ब्लड से, राइट? बाय ड्रेनिंग द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी एंड पासिंग इट थ्रू द डायलाइजिंग यूनिट. एक यूनिट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस यूनिट इज एक्सटर्नल. इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल यूनिट है. दिस इज अ एक्सटर्नल यूनिट. सो ब्लड को बाहर निकाला जाता है एंड देन एक्सटर्नल यूनिट विच इज द डायलाइजिंग यूनिट में डाला जाता है. इट इज फिल्टर्ड एंड देन द फिल्टर्ड ब्लड इज अगेन पंप्ड इनटू द बॉडी. यू गॉट इट? समझ में आ गया? शेखर बेटा, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आता है, सो आई वोंट अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इन इंग्लिश. ओके, इंग्लिश या तो हिंदी में लिख दो आप प्लीज. डायलाइजर, हेमोडायलिसिस, करेक्ट. ओके, सो यू गॉट द पॉइंट. अच्छा, अब ब्लड निकाल देना मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड से बॉडी से पूरा ब्लड ड्रेन आउट कर देंगे बाहर कुछ कुछ करके एंड देन डाल देंगे ना. इट्स अ कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस. ये होता रहता है बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आवर बॉडी कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ ब्लड. हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं है ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो सकता. Otherwise our cells will die and hence we will die. Okay? चलो आगे बढ़े. Hemodialysis. The dialyzing unit consists of क्या क्या है इस dialyzing unit में? The filter that removes the wastes. Okay? इसीलिए artificial kidney भी कहते हैं इसे, और the dialyzer. The dialyzing unit is also known as the artificial kidney or the dialyzer. Fluid in the dialyzer. This is the dialyzing fluid. It is called dialyzing fluid, also known as the dialysate. Okay, dialysate, dialyzing fluid. इधर हो गया मेरा dialyzer और the artificial kidney. Yes, lasts for 5-6 hours. Correct. Okay. So आपको ये समझ में आ गया? I'll show you the process. एक बार देख लो. Basic. Don't get overwhelmed because मैं हर एक स्टेप को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा. I'll explain you. दिख गया? गौर करो. वेन, आर्टरी. आर्टरी से निकाला जाता है पहले. फाइन. मतलब इफ आई कनेक्ट टू माई आर्टरी अ ट्यूब, सो वहां से ब्लड बाहर ड्रेन आउट होंगे. वेयर इट इज गोइंग, अ प्रेशर मॉनिटर इज यूज्ड एंड ब्लड पंप. ब्लड को पंप किया जाएगा यहां से टू द हेपारिन पंप. इसका फंक्शन क्या है आप खुद बता सकते हो. इफ यू नो व्हाट इज हेपारिन एंड व्हाट इज द फंक्शन, आई विल टॉक अबाउट इट इन अ वाइल. तब तक आप सोच लो हेपारिन का फंक्शन क्या है. ओके, चलो हेपारिन पंप. अब यहां से इसको भेजा जाएगा कहां? द डायलाइजर, द डायलाइजिंग यूनिट. ओके, डायलाइजर, सॉरी, द डायलाइजर. इस पूरे चीज को यूनिट बोलते हैं. यूज डायलाइजेट यहां से निकल जाता है, फ्रेश डायलाइजेट यहां पे डाला जाता है. इट आई एम टेलिंग यू इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस. इसको करवाना पड़ता है कंटिन्यूअसली. इट कैन नॉट बी कि हाँ इतना ही डायलाइजेट है तो इतना ही प्यूरिफाई करेंगे ना. इट हैज टू बी कंटिन्यूअस. जैसे हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है एंड द यूरिन इज थ्रोन आउट कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बॉडी थ्रू आउट द डे. सो दिस ऑल्सो हैव टू हैपन इन सच अ वे. एंटी हेपरिन पंप, यहाँ पे एंटी हेपरिन दिया जाता है. एयर ट्रैप्ड एंड प्रेशर मॉनिटर, प्रेशर मॉनिटर किया जाता है. अच्छा, प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यू नो बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू योर वेन्स एंड द आर्टरीज. यहां पे अगर प्रेशर मॉनिटर नहीं करोगे इट कैन लीड टू बर्स्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो प्रेशर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. सो फिल्टर्ड ब्लड इज पुट टू द वेन्स. फाइन. एंटीकोगुलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड. हिमांशु, यू आर न्यू, परफेक्ट. बेटा हिमांशु देख लेना इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट प्लीज आस्क. फाइन, आगे बढ़े. थोड़ा सा और डिटेल में के बात करूं. देखो, डायलाइजर इज मेड अप ऑफ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब. कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब से ये डायलाइजर का जो यूनिट है, डायलाइजर स्पेसिफिकली, इट इज मेड अप ऑफ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब. ओके, ये मेन पार्ट है, द डायलाइजिंग यूनिट का मेन पार्ट है. डायलाइजेट क्या है?
ब्लड प्लाज्मा माइनस द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये बन गया मेरा डायलाइजेट. फाइन. ओके. सो डायलाइजिंग यूनिट, डायलाइजेट जो कंपोजिशन होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट लैक्स नाइट्रोजनस वेस्ट. मतलब सोचो क्यों, हमें आइडेंटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो शिफ्टिंग कैसे होगी, नहीं तो डिफ्यूजन कैसे होगा. सो दैट्स द रीजन द डायलाइजेट इज वेरी मच सिमिलर अलाइक विथ द ब्लड प्लाज्मा, बट डिफरेंस यही है कि यहां पे ब्लड में नॉर्मली देयर इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, बट हियर नाइट्रोजनस वेस्ट इज नॉट देयर. हिमांशु अपने बायोमोलिक्यूल्स के सारे लेक्चर्स देखे. परफेक्ट हिमांशु, ब्रिलियंट. आई होप यू लाइक्ड इट. हो गया ये. अच्छा आगे बढ़े. देखो ये यूनिट कुछ इस तरीके से दिखा जाता है, दिखता है सॉरी. फ्रेश डायलाइजेट एंड यूज डायलाइजेट यहां से पंप आउट किया जाता है. नाउ सी हियर हेपारिन, एज सम पीपल वर, आशा, सारा, एमी वाज टेलिंग, सचिन वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट, ये एंटी कोआगुलेंट है. हेपारिन इज एन एंटी कोआगुलेंट दैट इज एडेड टू द पंप, क्योंकि ब्लड में कोआगुलेशन हो जाएगा, यू आर टेकिंग इट आउट ऑफ द बॉडी, सो इट विल कोआगुलेट. सो कोआगुलेट हो जाएगा तो कैल्शियम फिल्टर होगा. सो एंटी हेपारिन हैज टू बी गिवन. फाइन. ओके. नाउ so this is done to avoid clotting of blood as it is passing through the dialyzer. Fine. Again, now so the blood which consists of nitrogenous waste, which is basically the impure blood I am talking about, is drawn from the artery. Anticoagulant heparin is added and then it is sent to the dialyzer. अब हम पहुंच गए इधर. अब दिखाता हूं एक stretched out tubular portion of the dialyzer. फाइन. कुछ इस तरीके से दिखेगा. यू सी द आरबीसीज गोल गोल जो दिखा रहा हूं, और वेस्ट छोटे छोटे जो गोल डॉट्स है, दीज आर द वेस्ट्स. फाइन. अब यहां पे देखो, ये जो इधर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इफ यू कैन सी, राइट. नाउ द ब्लड एंड द डायलाइजेट आर सेपरेटेड बाय अ पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन. दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये किससे बने होते? दिस इज अ पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन. फ्रेश डायलाइजेट इज पंप्ड इनटू द डायलाइजर. यहां पे फ्रेश डायलाइजेट पंप किया जाता है, राइट. पैरेलली द इंप्योर ब्लड आल्सो फ्लोज इनटू द डायलाइजर. अब समझो यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है. सॉरी, इट हैज टू बी इरेज्ड. ये क्या हो गया दोनों तरफ से? 1 मिनट, वेयर इज द इरेजर? दोनों तरफ से, जस्ट सम मोमेंट, 1 मिनट. या सो यहां पे इनिशियली द नाइट्रोजनस वेस्ट वर नॉट देयर. यहां पे हाई है कॉन्सेंट्रेशन, सो फ्रॉम हाई टू लो, है ना. मूवमेंट होगा, यस, मूवमेंट हो गया. सो दैट मीन्स इनके कॉम्पोजिशन सिमिलर रखने की वजह से, एंड ओनली द डिफरेंस वाज दैट द नाइट्रोजनस वेस्ट्स वर नॉट देयर. सो व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम द ब्लड, द नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैव moved because this is a cellophane tube made up of cellophane, right? So it is semi permeable, so it is allowing the movement of these wastes. So dialyzer पे आ गया. Okay, fresh dialyzer यहां से, खराब वाले यहां से निकाल देते हैं. Got it? Now what do you do if a bulb no longer works in your home? अच्छा, अब तक जो मैं पढ़ा है, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया? ठीक है ना? Till this it is clear? Now the next question. Perfect. What do you do? अगर एक बल्ब खराब हो जाता है, what do you do? Nothing. We just replace it. We replace it. Our kidneys also work in a similar way. अगर किडनी खराब हो जाए, there's a possibility for transplant. Renal transplant can happen. So let us see what is renal transplant. The functional kidney from a donor, functional kidney एक donor से लेके damaged kidney from in a receptor पे replace किया जा सकता है. This is known as the kidney transplant. Transplanted kidney is also known as the graft. जितना आसान तरीके से मैंने कह दिया, इतना आसान नहीं है.
It is not so easy. ये transplant इतना easy नहीं है. I'll tell you why. First of all, let us try to understand who can be the kidney donor. कौन kidney donate कर सकते हैं? Following. Any human being with a kidney which is healthy. Identical twins and close relatives only. Close relatives, identical twins हो तो best होता है. Close relatives होने से भी चल जाता है. Now, ये जो graft है, correct? Now this graft, I'll talk about the kidney graft can be classified into two types, isograft and allograft. Fine? देखो, अब ध्यान से सुनो. Kidney which is being transplanted surgically is known as the graft. जिसको transplant किया जा रहा है, वो graft बन गया. अब graft क्या बोला? Isograft and allograft. Isograft मतलब अगर from identical twins से लिया जाता है, then it is known as isograft. अगर close relatives से लिया जाता है, then that is the allograft. So that is not from the identical twins. Fine. Now, अब ध्यान से सोचो. We have studied, you know about the immune system of our body. Okay? Graft rejection possible. Very good, Sara. Very good. अब क्योंकि ये किसी और के शरीर से आ रहा है, तो हमारे बॉडी, अगर सोचो मैं रेसिपिएंट हूं, कोई और मुझे डोनेट कर रहे हैं, फॉर माई बॉडी दिस इज समथिंग फॉरेन. माई बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज सो इजीली, है ना. सो जिसके वजह से आवर बॉडी स्टार्ट्स इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स. इट विल ट्राई टू kill the cells of this grafted kidney. So what will happen? Graft rejection. This is known as the graft rejection. Rejection of the transplanted kidney into by the immune system. Fine. So इसीलिए कहते हैं अगर identical twin से लिया जाता है, so that is there are very less chances of graft rejection. Fine. Close relatives से भी हो सकता है, but there are more chances of getting it rejected. But अगर थोड़ा सा close relative या तो twins नहीं है, then there are high chances of graft rejection. So graft rejection of the transplanted kidney by the immune system. अब क्या करेंगे? Immune system क्योंकि trigger हो गया, तो immunosuppressants दिया जाता है, so that the immune system after the transplant has happened, immunosuppressants are, the patient has to stay under immunosuppressant so that the immune response is not aggravated inside the body. Okay. Well, मेरा एक दोस्त था, so he was constantly complaining of a painful backside. It was a lot of pain. डॉक्टर ने उसको एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए रिकमेंड किया, अल्ट्रासाउंड, और इमेज कुछ इस तरीके से है. सी द डिफरेंस. डू यू सी द डिफरेंस? रीनल स्टोन, कहते हैं ना किडनी में स्टोन हो गया, इसका मतलब क्या है? I'll talk about it. So let me talk about the renal calculi or the renal stones. Deposits of insoluble mass. These are not the soluble masses. These are not the soluble substances. Insoluble masses of crystallized salts in the kidney. Okay. See the frequency. 1 in 11 people suffer from the renal calculi. Fine. Kidney stones. Symptoms देखो. Fever, stomach pain, blood in the urine, vomiting, dizziness, backache. काफी disturbing होता है ये. Okay. There are many ways in which these stones can be broken down and released out from the body, but अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, it has to be operated. Let's see. Types of the kidney stones. Okay. Cystine stone. देखो, cystine stone क्या है? These are composed of the amino acid. कौन सा? cystine. इसके crystals बन गए तो. Calcium stones. Calcium stones in the form of calcium oxalate. Calcium oxalate. Fine. Uric acid stones. समझ में आ रहा है? Uric acid stones are associated with, which is pH less than 5. Intake of, purine high foods, purine rich food items like fishes, legumes in too much amount can cause this type of stones, the uric acid stones.
and struvite stones. What are these? These are composed of the magnesium ammonium phosphate. Magnesium ammonium phosphates. ठीक है? So these are the four basic types. Four types of renal stones. Noted? Now, see here. Simple stones too large to pass through. Okay? Ultrasound से क्या हो जाता है? Ultrasound, these are high frequency sound waves or the shock waves. This can crush the stones and it will break into smaller pieces and it will help in passing the stone particles through the urine. But अगर small है तभी काम आ जाता है. अगर नहीं होता है then surgical methods has to be taken. Doctor will always recommend you कि take enough amount of water always. ठीक है? तो आपको हमेशा ज्यादा करके पानी पीना चाहिए. You have to do it. It will help your system to be clean. ऐसे stones avoid कर सकते हो आप. Fine. So surgical method हो सकते हैं. Ultrasound से break करके इसको निकाला जा सकता है with medicine. Fine. Got it? Recall nephrons, part of the nephrons. दिख रहा है? Fine. अच्छा. ये सेक्शन, ये आपको पता है, सेक्शनल व्यू हमने देखा है. ओके, एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल अपने पता है, आपको पता है, नेफ्रॉन्स वी हैव स्टडीड. ठीक. कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुले, इट कैन swell, inflammation. Such a condition is called the glomerulonephritis. This is nothing but the inflammation of the glomerulus. Glomerulus अगर inflammation हो गया, causes किस वजह से हो सकता है? Malfunctioning of the immune system, HIV infection की वजह से हो सकता है, hepatitis B, hepatitis C की वजह से हो सकता है. Okay, so these are the various causes of glomerulonephritis. Got it? Which is nothing but the inflammation of the glomerulus. Fine. Causes, symptoms देखो, hypertension, swelling, हाथ पैर swell हो जाता है, right? Froth in urine, urine में frothing होता है, shortness of breath, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है. Remedy, immunosuppressants, क्योंकि immune system actively, inflammation is nothing but your body is acting or your body is trying, has a severe immune response which has been triggered. So इसको कम करना पड़ेगा. कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Immunosuppressants देना पड़ेगा, है ना? Consuming less salts. और कुछ देख लेते हैं. Other excretory system disorders. देखो, ketonuria, alkaptonuria, pyuria, glycosuria, hematuria, and dysuria. So these are some of them, other excretory system disorders. I'll talk about it one by one quickly. छोटा करके नोट कर लो. Ketonuria, presence of the ketone bodies, presence of ketone bodies in urine. Glycosuria, presence of excess glucose in the urine. Fine. Generally glucose बहुत कम amount में रहता है urine में, but अगर high amount में है, this is a condition called the glycosuria. So glucose ज़्यादा है. Next क्या है? देखो, glycosuria, glucose in urine normal is 0 to 0.25 mg per ml, but more than 0.25 mg per ml मतलब glycosuria condition है. Next, alkaptonuria, inability to break down phenylalanine and tyrosine. Phenylalanine and tyrosine, ये अगर break down नहीं हो रहा है body में, this will get accumulated. This is called alkaptonuria, right? Okay. Now, hematuria, presence of blood in urine. Pyuria, this is presence of white blood cells or pus urine में आ सकते हैं. This is a very critical condition. So, pyuria भी बोलते हैं. Dysuria is pain while urinating. ये क्यों हो सकता है? This is a medical term given to the pain or the discomfort when what people face when they are urinating. ये क्यों हो सकता है? Okay, this can cause because of some inflammations in the urinary tract,
This inflammation can happen because of various infections in the urinary tract. Okay, so ये समझ में आ गया. So this chapter is done. This chapter is done. So अब आपको properly revise करना जरूरी है. You have to revise this chapter properly so that you can answer all the questions. I have mentioned this already that this chapter is very, very, very important. So keep revising this chapter ताकि कोई भी सवाल यहां से पूछा जाए you will be able to answer. Okay, so thank you so much for joining. What we will do is next session I'll see you Wednesday. Today is Monday. Wednesday, Aakash BYJU'S NEET YouTube channel, same time 6 PM. But I am requesting बेटा सब लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना. बहुत इजी चैप्टर है पर डिफिकल्ट तभी हो जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो. फाइन. और प्लीज अंडरस्टैंड मैकेनिज्म समझना ये आसान नहीं है. मैकेनिज्म तभी आप समझ सकते हो जब आप ब्रेक डाउन करके, जैसे मैंने पढ़ा है, ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो मैकेनिज्म आसान हो जाएगा एंड यू वोंट फॉरगेट. फाइन. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कीप वॉचिंग. आपका नेक्स्ट सेशन भी आने वाला है, सो थोड़ा सा रेस्ट लेके बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन.